particularly the poor, the vulnerable, and the youth, have never felt so uncertain about the present and so anxious about the future. Prices for food items have increased at an astronomical rate. 5 years ago, 10 kgs of wheat flour would cost less than rupees 400, and today it costs more than rupees 1,400. Similarly, prices of milk, edible oil, and dal have increased by 113%, 217%, and 353% respectively in the last 5 years. Electricity prices for up to 50 units have increased by 277%, and petrol by 195% in the same time period. 8 years ago, a poor household whose joint income was rupees 35,000 rupees could buy sufficient amount of atta, edible oil, milk, and other food items to provide nutritious food for their families, afford a 2-room house, and put their children through school, and have enough savings for medical emergencies and recreation. Today, that would require a joint income of 70,000 rupees to fulfill those same needs. This increase in cost of living and erosion in the value of wages is unprecedented and unacceptable. In this climate of inflation, unemployment, and resulting poverty, the continuing instability and consequent low growth has meant that jobs are difficult to come by, and many poor people are resorting to seek low-paid jobs in the informal sector. The poorest 10% of the population is working for as low or lower than rupees 14,500 a month. Today, 93 million people in Pakistan, which is 40% of our population, lives below the poverty line, and 15 million people have been added to this list between 2018 and 2023. On the one hand, we have a historic economic crisis, and on the other hand, we have catastrophic climate crises that not only have an outsized impact on our economy, but also threaten the life and well-being of every Pakistani. Once in 100-year floods and droughts have become a seasonal affair. After the Arctic and the Antarctic, the largest presence of snow and ice in the Himalayan region, scientists have declared it is the third pole. Pakistan is undeniably a frontline state in the climate crisis. It is predicted that Pakistan's 241 million people will first be at risk of perpetual floods and ultimately perpetual droughts. This is despite Pakistan's carbon footprint being less than 1%. We need to completely reform Pakistan's development priorities, focus on climate resilience, adaptation, and energy transition. We can do this in a manner that leads to inclusive growth and generates green jobs, battling not only this climate crisis, but the rampant inflation, unemployment, and poverty as well. We must put ordinary working people, women, men, and the youth center stage, empowering provinces, local governments, and communities,
and protecting the most vulnerable. Our 10 pledges. Pledge number 1 is doubling real income with an increase in the minimum wage in real terms by 8% every year. That is our pledge, that we will increase minimum wage in real terms by 8% every year to take it to a living wage. Double public investment, leading to large-scale increase in employment opportunities and thus reducing unemployment and underemployment. We will focus investment and jobs creation on the needs of local communities. Public-private partnership in the social and productive sectors at the provincial and local levels. We will achieve major boost in private investment in the housing sector by the people at the bottom of the pyramid, by a massive increase in the private home ownership amongst the poorest of the poor. And reforms and investments in agriculture and small business will lead to growth in incomes and employment for the poorest. Our second pledge is our Green New Deal. We have a climate change-related investment will be undertaken in the public sector and the public-private partnership mode and by foreign direct investment. We aim to completely restructure Pakistan's development strategy, Pakistan's development agenda, Pakistan's PSDP, to tackle the climate crisis. Investment in Pakistan's public sector infrastructure, including roads, communication, health, irrigation, agriculture, with a focus on climate resilience. Once investments are made, it will unleash economic activity, generate employment opportunities, and prepare us for the impacts of climate change. Indigenous and green energy. Access to affordable electricity is a right. The existing system of pricing and distribution has failed our people. We will provide sustainable solutions to the energy crisis by providing electricity through indigenous sources and renewables. We will establish green energy parks across Pakistan through public-private partnership, providing off-grid power and green energy solutions for communities. In order to catalyze the energy transition, the poorest households will be given free electricity up to 300 units through solar generation, and this will be funded through carbon credits. Our third pledge, education for all. We will ensure schooling for all girls and boys of school-going age and implement Article 25A of the Constitution in letter and spirit. Ensure the provision of quality primary schools within 30 minutes travel time and quality middle and secondary schools within 60 minutes travel time in all communities. Stipends will be provided for school-going children in rural and low-income urban communities. And we will establish, inshallah, we will establish a university in every district of Pakistan. Our fourth pledge is healthcare for all. We believe that there's nothing more important than the health of a nation, and to this end, we will extend health initiatives already in place in Sindh across Pakistan. We will provide free primary health care and medicines across the country to the needy. Ensure all basic health units are fully operational. Provide free treatment for chronic disease.
chronic diseases, diseases of the heart, diseases of liver, kidney, through public sector as well as through the public-private partnership model. Our fifth pledge is housing as a right. Housing for the poor, the landless, and the working class. Schemes covering rural and low-income urban areas in all provinces and regions. Modeled on the success of historic initiatives such as the Punjab Marhala scheme and the ongoing Sindh People's Housing Program for flood effectives. Families without ownership will be covered. At least 3 million climate-resilient homes will be built, and women heads of households will get the legal titles, the land rights of these properties. Kachi abadis across the country will be regularized, and the inhabitants will get ownership rights. They will also get their Larkana hukuk. People living in the Kacha area, जहाँ से आजकल ये जो law and order situation है, उनको हम दावत देते हैं, उनको हम कहते हैं कि हम आपको मेन स्ट्रीम में लेकर आना चाहते हैं. आप ये हथियार छोड़ दे, ये वायलेंस करना छोड़ दे, आप पुरअमन तरीके से मुआशरे में आए, और मैं इंशाअल्लाह ताला आपके ख़वातीन को भी कच्चे में मालिकाना हुकूक दिलाऊंगा. We will, and by harnessing public and private sector, we will be harnessing the public and private sector for home loans and mortgages for working people and for the lower middle class. ताकि एक तो हम गरीब तरीन लोगों के लिए पक्का घर बनाएंगे, मालिकाना हुकूक देंगे, मगर उनके पास जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो सफ़ेद पोश तबका है, उनके लिए हम समझते हैं कि मुल्क भर में अब बहुत महंगा हो चुका है घर लेना, बहुत मुश्किल हो गया है घर लेना. तो हम चाहते हैं कि ख़ास तौर पे वो उन नौजवानों के लिए जो नया अपना रोज़गार कर रहे हैं, या पहला एक ख्वाहिश होता है कि वो अपने लिए एक घर ले अपने ख़ानदान के लिए, तो उसमें हम चाहते हैं कि जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको हुकूमत मदद करे, और हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को मोबिलाइज करके ये कर्ज दिलवाए उनको, मॉर्गेज दिलवाए उनको, ताकि वो अपने लिए वो अपना घर ले सके. जो हमारा sixth pledge है वो गुर्बत मिटाओ, बेनज़ीर income support expansion. We will expand the Benazir Income Support Program network to provide much-needed support to additional citizens who have fallen below the poverty line because of the unprecedented inflation and unemployment we are experiencing. In addition to poverty-based cash transfers, we will expand the following: Wasila-e-Haq, Wasila-e-Taaleem, Wasila-e-Rozgar, and Wasila-e-Sehat. Wasila-e-Haq ke through a program, the program to provide micro loans bila sood karze to women with a view to enhance small business and entrepreneurship among the underprivileged so they can break out of the cycle of poverty. We have successfully implemented this in Sindh with the People's Poverty Reduction Program through implementation partners like the SRSO. Wasila-e-Taaleem, the program is to provide
a top-up cash transfer per eligible child in the household with no upper limit on the number of children per household who are eligible for the program. Recipients of the Wasila-e-Taaleem transfer will remain conditional on maintaining a minimum 70% attendance rate. तालीमी इदारे में स्कूल में आपका अटेंडेंस रेट जो है उसको 70% होना पड़ेगा ताकि ये वसीला-ए-तालीम उनको मिले. Wasila-e-Rozgar mein, the program is to provide vocational training to a number of beneficiary families. The target beneficiaries will be offered up to 1 year training option that match their personal circumstances and self-employment opportunities that exist within their district. Wasila-e-Sehat ke through inhi khandanon ko we want to provide the program to provide a protection against catastrophic health expenditure to registered beneficiaries all across the country. Sindh mein to humne muft sehat ke idare khade kiye hain, baaki mulk mein ye options available nahi hain, aur hum samajhte hain ki iske bajaye ke tamam logon ko koi sehat card dene ke कि हम उन गरीब तरीन लोगों को जिनका हक बनता है उनको हम पूरी तरीके से कवर करें. तो ये हमारा गुर्बत मिटाओ बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिलसिले में जो हमारे वादे हैं. उसके बाद और वादे भी हैं. नंबर 7, किसान खुशहाल पाकिस्तान. सॉरी, वैसे तो हम कहते हैं किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, लेकिन ये हमारा वादा है कि खुशहाल किसान तो खुशहाल पाकिस्तान. Agriculture is the backbone of our economy, and we will need to invest heavily in the farming sector and particularly small farmers. To this end, we will commit the following: the recognition of small farmers, Kisan, Hari, male and female agricultural workers as stakeholders in agriculture through registration with the Hari card and the Kisan card. Targeted, तो हमें तमाम जो हारी होते हैं, छोटे ज़मींदार होते हैं, छोटे किसान होते हैं, उन सब को हम उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उनको हम हारी कार्ड दिलवाएंगे. And then through this card, फिर इस कार्ड के थ्रू हम टारगेटेड इंटरवेंशंस करेंगे जो कि डायरेक्टली किसान तक पहुंचे, डायरेक्टली किसान के हाथ में, किसान की जेब में ये मदद दिया जाए. इस कार्ड के थ्रू अगर हमने हाई क्वालिटी सीड्स को सब्सिडाइज करना है तो हम कार्ड के थ्रू करेंगे. अगर हमने DAP और यूरिया को सब्सिडाइज करना है तो हम कार्ड के थ्रू इंशाल्लाह ताला करेंगे. हम आपको इस कार्ड के थ्रू आपके प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग और प्रोड्यूस में भी मदद करेंगे. लैंड इम्प्रूवमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट के लिए मदद किसान कार्ड के थ्रू, हारी कार्ड के थ्रू मिलेगा. लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन सर्विसेज भी हारी कार्ड के थ्रू, किसान कार्ड के थ्रू फैसिलिटी मिलेगा. क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो मौसमी तब्दीली की वजह से कभी ये सैलाब आ जाता है, तो कभी ड्राउट है, कभी ज़्यादा गर्मी है, तो कभी बहुत ठंड है, उसके लिए अब हमें अडेप्ट होना है. जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका सपोर्ट अगर हमने छोटे ज़मींदारों को, छोटे किसानों को पहुंचाना है तो वो भी हम डायरेक्टली किसान कार्ड के थ्रू उनको मदद पहुंचाएंगे ताकि वो सहूलत ले सके. साथ साथ जो ये कुदरती आफत है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ड्राउट हो, या ये लोकस्ट का भी हमारा एक हमले हुए थे, तो हम चाहते हैं कि ख़ास तौर पे जो गरीब जो छोटे किसान हैं, जो हारी हैं, उनके लिए हम क्रॉप इंश्योरेंस का सहूलत इस हारी कार्ड के थ्रू उनको दिलवाना चाहते हैं ताकि अगर किसी साल में कोई नुकसान हुआ और उनको अगर हमारा बेनज़ीर हारी कार्ड के थ्रू ये वो रजिस्टर्ड है तो नुकसान उठाने के बजाय उनका क्रॉप इंश्योरेंस वो नुकसान जो है वो कवर करें. And then we also want to promote diversity in crop and ensure crop support prices for various crops. We also want to reform of the tenancy and labor laws to boost agriculture investment, leading to inclusive
growth. अच्छा, वो किसानों के लिए हमारा वादा, फिर उसके बाद मजदूरों के लिए, मजदूर को मेहनत का सिला हम दिलवाना चाह रहे हैं, ये हमारा वादा है. और informal sector workers continue to lack job security and structured access to social protection. To facilitate them, we aim to guarantee a wage commemorative to their work, working towards a living wage for all. Registration of all workers, including the informal sector, those self-employed and agricultural workers, for social protection. And then through the Mazdoor card, they will be able to avail pensions, disability benefits, old age benefits, health insurance, school fees, जो भी तमाम तो मजदूरों को सहूलत उनका हक जो है उनको हम डायरेक्टली बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू ये तमाम सहूलतें पहुंचाएंगे. माजी में जो कोई आप अगर कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं तो फिर वो वहाँ से वो इंडस्ट्री से पैसा लेके फिर EOBI और वो पेंशन का सिलसिला और सब कुछ तो चलता रहता है. अब हम क्या चाहते हैं कि मजदूर कार्ड के थ्रू कि जो भी मेहनत करने वाले शख्स हैं, जो भी मेहनत करता है, जो काम करता है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो, चाहे वो किसी दुकान में काम करे, रेहड़ी वाला हो, रिक्शा ड्राइव करते हुए, मीडिया के ऑफिसेस में काम करते हुए, हम चाहते हैं कि आपको भी पेंशन का हक मिले. हम चाहते हैं कि आप सबको भी सोशल सिक्योरिटी की जो सहूलतें हैं हम वो पहुंचाएं. तो हमने इसको एक्सपैंड करने के लिए इसलिए कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहले लेबर राइट्स दिलवाए थे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसके बाद लेबर राइट्स दिलवाए थे. सदर ज़रदारी के दौर में पहली बार हमने 2007 से लेके 13 और उससे आगे तक जो एक्सपेंशन हुआ है लेबर राइट्स में पाकिस्तान में वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ. अब इंशाल्लाह ताला 21st सेंचुरी के मुताबिक 2024 में हम मजदूर कार्ड लॉन्च करके इनकलाब लेकर आएंगे हमारे मजदूरों के लिए और उनको अपना मेहनत का सिला दिलवाएंगे. फिर हमारा आखिरी दो वादे, जवान मुस्तकबिल. Pakistan has one of the largest young populations in the world. To best utilize this demographic and aid their seamless entry into the workforce, we will introduce the Youth Card, which will provide 1 year stipend. आपके लिए है, जरा सुने. आप एक मिनट. We will introduce the Youth Card, which will provide 1 year stipend for educated, deserving young men and women to transition to work. Student loan opportunities for higher education, and we will also link up with internships and trainee jobs in the public and private sectors, upgradation of its infrastructure to guarantee. Oh, no. We will also pledge for an upgradation of IT infrastructure to guarantee high-speed connectivity across the country to incentivize youth-led startups in all sectors. Youth centers will be established across the country for accessing libraries and digital libraries, free Wi-Fi, sports, culture and recreational facilities, vocational training, skills and language development classes, career and employment facilitation services. So दो चीजें हैं यहाँ जवान मुस्तकबिल के वादे में. एक हमारा यूथ कार्ड है और यूथ कार्ड के थ्रू हम चाहते हैं कि हम अपने नौजवानों को जो कि तालीम या कुछ स्किल्स हासिल कर चुके हैं मगर वो रोज़गार की तलाश में है, उनको हम 1 साल के लिए हुकूमत की तरफ से माली मदद पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो जब वो रोज़गार की तलाश में हैं उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ हो, उनको कोई सहूलत मिले. साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट वाइज यूथ सेंटर्स खोलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो यूथ मरकज़ होंगे ये हमारे नौजवानों के लिए उनको पॉजिटिव एक्टिविटी दिलवाने के लिए, एक सेफ स्पेस फॉर पॉजिटिव एक्टिविटी दिलवाने के लिए हम ये यूथ सेंटर्स खड़ा करना चाहते हैं. कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी लरकाना में सर शाहनवाज़ भुट्टो लाइब्रेरी बनाया और आज तक जिस तरीके से शहर के अवाम उस सहूलत को
इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब आपके सामने हैं. अब ज़रा सोचिए कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऐसे फैसिलिटी पहुंचाएं जहां ना सिर्फ वो लाइब्रेरी हो, साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी हो, साथ साथ वाईफाई का फैसिलिटी हो, साथ साथ एक स्पेस हो ताकि अगर उन्होंने स्पोर्ट्स खेलना है तो उनको स्पोर्ट्स के वो स्पोर्ट्स खेल सके. अगर वो सकाफती प्रोग्राम में एंगेज करना चाहते तो वो सकाफती प्रोग्राम करे. अगर वो गाना सीखना चाहते तो वो गाने सीखे. अगर वो नाचना सीखना चाहते तो वो नाचने सीखे. लेकिन एक ऐसा पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के लिए एक ऐसा जगह हम मुयसर करना चाहते हैं. और उनके साथ साथ तो रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स और इन सारी चीज़ें के साथ साथ हम चाहते हैं कि वो तमाम मॉडर्न स्किल्स जो पूरी दुनिया में लेबर की ज़रूरत है वो मॉडर्न स्किल्स से हम वो मॉडर्न स्किल्स अपने नौजवानों को सिखाएं. यूथ डेवलपमेंट के मतलब में आपको वो मॉडर्न स्किल्स देंगे ताकि वो स्किल्स आप लेके या पाकिस्तान में या कहीं और रोज़गार आपको मिल सके. तो वो स्किल्स हम आपको दिलवाएंगे, चाहे वो कोई टेक्निकल स्किल हो या मैं समझता हूँ जो बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज स्किल्स. हम आपको लैंग्वेज कोर्सेज भी लेके देंगे ताकि अगर आपने कहीं बाहर जाके काम करना है तो हम आपके इन यूथ सेंटर्स में वो लैंग्वेज कोर्सेज दिलवा सकते हैं. मैं वज़ीर ख़ारजा रहा तो मुझे पता चला कि जापान में उनको हर साल 4 मिलियन लोग चाहिए, लो स्किल मीडियम स्किल वर्कर्स चाहिए. इसलिए उनका डेमोग्राफिक्स का प्रॉब्लम है जापान में. तो मैं चाहूँगा कि मैं डायरेक्टली आपको लिंक कर लूँ. अगर अरबी की ज़रूरत है तो अरबी सिखाऊँगा, अगर जापानीज़ की ज़रूरत है तो जापानीज़ सिखाऊँगा, अंग्रेज़ी की ज़रूरत है तो अंग्रेज़ी सिखाऊँगा. और जिस तरीके से फिर कायदे अवाम ने दुनिया भर में पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार का बंदोबस्त किया, इंशाअल्लाह ताला मैं आपका रोज़गार का बंदोबस्त करूँ. आखिरी बात जो हम चाहते हैं इन यूथ सेंटर्स में कि एक करियर सर्विसेज मिले. करियर सर्विसेज का मतलब कि कोई एक करियर्स का दफ्तर का रोज़गार के लिए उधर दफ्तर हो और वहाँ आप जाके आप कह सके कि मैं रोज़गार की तलाश में हूँ, वो आपको मदद करे. अगर आपको स्किल्स की ज़रूरत है वो स्किल्स की तरफ आपको भेजे. लैंग्वेज की ज़रूरत है आपको वहाँ भेजे. आपसे पूछे कि आपके अचीवमेंट्स क्या है, आपके क्वालिटीज़ क्या है आपका, और उस अंदाज से फिर वो आपको बताए कि आप कहाँ रोज़गार तलाश करें. खुद उनके पास पूरा डाटाबेस हो कि पूरा पाकिस्तान में क्या वैकेंसीज़ है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो. और जो बेरोज़गार यूथ है हमारा उनको हम डायरेक्टली कनेक्ट करें उन वैकेंसीज के साथ. और ये जिम्मेदारी अब हुकूमत अपनाए कि हमारा काम है अपने नौजवानों को रोज़गार दिलवाना. तो ये हमारा जवान मुस्तकबिल का 9th प्रॉमिस है. आखिरी हमारा जो वादा है ये भूख मिटाओ का है. To directly address the needs of the food insecure, we will aim to make nutritious food available at affordable prices, boost domestic production, subsidize local producers, and connect women with the market economy as entrepreneurs. We will also employ a rights-based approach and promulgate the Right to Food Act in Parliament. Under this act, every eligible household will be entitled to purchase essential food items on subsidized. Eligible households will be entitled to purchase food items on subsidized rate. तो अगर आप उन deserving families में गिने जाते हो, अगर हमारे सर्वे के मुताबिक आप गरीब तरीन ख़ानदानों में शामिल हो तो आपको वो हम फिर कम कीमत पे वो खाने पीने के अशिया पहुंचाना चाह रहे हैं. ये एक बहुत एम्बिशियस हमारा एक एजेंडम आइटम है जो हम यूएन काउंसिल वाइज पूरा पाकिस्तान में इसलिए करना चाहते हैं. इसलिए हम समझते हैं कि कोई भी पाकिस्तान का बच्चा या कोई भी पाकिस्तान का शहरी को भूखा नहीं सोना चाहिए. साथ साथ we will provide free 1,000 days nutritional program for expecting
for expectant and new mothers to decrease stunting, wasting and infant mortality. तो ये प्रोग्राम हमने जो पायलट शुरू भी किया है सिंध में, मगर हमने सिंध भर में एक्सपैंड करना है, मुल्क भर में एक्सपैंड करना है, कि पहले 1000 जो दिन जो है for a new mother, for an expecting mother, और जो पहले 1000 दिन होते हैं किसी एक बच्चा का जब वो पैदा होता है, उसके पहले 1000 दिन के लिए हम we will provide उनको हम स्टाइपेंड प्रोवाइड करेंगे, उनका टेस्ट एज इन वो लेकर आएंगे एवरी ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल्स, दे ब्रिंग देयर चाइल्ड इन, उसका हेल्थ टेस्ट भी होगा, वेट टेस्ट भी हो जाएगा, और हम इंश्योर करना चाहते हैं कि वो पहले 1000 दिन के लिए, बिकॉज दैट्स व्हेन द मदर इज मोस्ट वनरेबल एंड व्हेन द चाइल्ड इज मोस्ट वनरेबल टू इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी एज वेल. और लॉन्ग टर्म में हम जो वेस्टिंग है, जो मैल न्यूट्रिशन है, उसको भी एड्रेस करने के लिए वो पहले 1000 दिन के लिए हम इंश्योर करना चाहते हैं कि जो तमाम ज़रूरियात है उस बच्चा को मिले और वालदा को भी मिले. साथ साथ हम चाहते हैं कि स्कूल में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में उनको एक मील मुफ्त मिले, ताकि देखो ये पूरी दुनिया अब मान चुका है कि अगर आप भूखे हो आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे तालीम हासिल कर सकेंगे, कैसा वो आप अपना ग्रेड्स पे और अपना काम पे फोकस करेंगे. पाकिस्तान में अगर इतना हमारा तादाद, हमारा पॉपुलेशन का गुर्बत की नकीर के नीचे है, तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि बिला तफरीक हर किसी को जो गवर्नमेंट स्कूल्स के एक इनिशिएटिव शुरू करे, एक प्रोग्राम शुरू करे, जिससे हम अपने बच्चों को स्कूल्स में खाना दिलवाएं और वहाँ उनका तालीम में भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और जो हमारा क्रॉनिक स्टंटिंग, वेस्टिंग, मैल न्यूट्रिशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी, तमाम जो बीमारियाँ उसको भी हम एक तरीके से एड्रेस कर सकेंगे. ओके, वो हमारा 10 वादे हैं, काफ़ी बड़े वादे हैं और एम्बिशियस वादे हैं. और नाउ हाउ विल वी डू दिस? We pledge to combat the historic inflation, unemployment, poverty, and the climate crisis. The consumption-based growth strategy pursued by the PTI, the PMLN, and the Musharraf dictatorship has resulted in rendering Pakistan's investment ratio as the worst amongst other comparable countries. Moreover, public investment has plummeted from a high of 12% of GDP in the days of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto to only 2% of GDP in 2023. Through enhancing investment, we will ensure long-term and sustainable inclusive growth that will unleash unemployment opportunities for the youth of Pakistan. Our investment plan will be based on 2 prongs. We will revive investment in the country through public-private partnerships, emulating the model successfully implemented in Sindh already, and we will, most importantly, invest heavily in climate change adaptivity. बल्कि हम अपना पूरा जो डेवलपमेंट का स्ट्रैटेजी है, पूरा जो डेवलपमेंट का नक्शा है, पाकिस्तान का जो PSDP का रवायती तरीका है, वो कम्प्लीटली ख़त्म, बंद, एक नया सिलसिला शुरू करके हम अपना तमाम डेवलपमेंट, तमाम इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ का होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो या जहाँ भी हो, उसको इंशाल्लाह ताला हम एक क्लाइमेट के सिलसिले में और क्लाइमेट मौसमी तब्दीली के सिलसिले में उसको देखा जाएगा, और उस तरीके से इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा, पब्लिक डेवलपमेंट में इजाफा होगा, मगर अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जाएंगे. We will finance the People's Charter or the Awami Muashi Muaida through several means. One, by eliminating the 17 federal ministries that should have been devolved after the 18th Amendment. We will save in excess of 328 billion rupees annually. We'll eliminate subsidies to the elite, untargeted subsidies जो शराफिया के लिए मौजूद है, of over 1,500 billion rupees
1,500 billion rupees annually जो अशराफिया के लिए हमारा subsidies है, हम उनको बंद करके we will provide, these will be reallocated to social protection programs and for enhancing people-friendly, climate-resilient investment. By fundamentally restructuring Pakistan's development strategy to prioritize climate resilience and infrastructure, we should be better placed to tap into internationally available streams of climate finance. These include the Loss and Damage Fund agreed to in COP27 and other forms of concessional financing, including carbon credits. To increase investments and social protection in a sustained manner, it is necessary that revenue collection in Pakistan is increased. The low level of revenue over 2 decades demonstrates that fundamental reform in the revenue machinery is required. The only bright spot on the revenue collection front has been the revenue boards established at the provincial level. To collect GST on services, with Sindh leading the way. These provincial entities have performed much better than the FBR, and we will devolve the GST on goods as well. We will devolve the GST on goods that is still with the FBR to the provincial revenue boards. This will not only increase Pakistan's revenue performance, but will also unify GST collection. Our pledges are the only way forward, not only to break this vicious cycle of inflation, unemployment, and abject poverty, but also to address the climate crisis. We must invest in the people to foster inclusive growth and prosperity for all, not just for the privileged few. I thank you. ये हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा है, ये हमारा 10 नुकाती एजेंडा है। यहाँ पे हमारा अवाम की तरक्की के लिए, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें उस मंशूर को फंड करने के तमाम तरीक़ेकार, हम कहाँ से वो वसाइल लेंगे, वो भी मौजूद है। अब आपसे दरख्वास्त है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम से दरख्वास्त है, हमारा दरख्वास्त है कि आए इस अवामी मुआशी मुआहिदा के बारे में पाकिस्तान के अवाम को बताएं, पाकिस्तान के वोटर्स को बताएं, ताकि 8 फरवरी को वो तीर पे थप्पा लगा के अपना मुस्तकबिल, अपना किस्मत में वो तब्दीलियां लेकर आए, जिससे उनके मसाइल में कमी हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।